Hello guys, before we start with the discussion, we just want to inform you that we have launched a very special and unique type of program which is called Excel Mains through the previous year's questions. In this program, we are going to cover the entire syllabus of GS paper 1, 2, 3 and 4. The philosophy behind this program is we are going to cover the syllabus not randomly but just by using or referring the previous year's questions themes, and the themes are extracted from the last 40 years of previous year's questions. There will be a live discussion, there will be a answer writing with the mentors, and the second program is the intense answer writing program which is called Samachar Vani Plus, in which there will be a weekly classes on 10 topics which are extremely important from the UPSC mains and prelims point of view. There will be an answer writing, there will be a questions given after each and every class based on those 10 topics. So even if you are a beginner, this is a good opportunity for you to begin with the answer writing. For any further queries or if you wish to talk with a mentor, if you have any doubts, please drop us a message on the number given below. Thank you. Hi Shweta, hi Maniratna. Hello, sir. Good evening, sir. So we are going to see what could be the approach for the question which was given to you guys. So have you wrote the answer of that? Have you tried to attempt it? Yes, sir. Okay, great. So I'll start sharing the screen and we can discuss the approach. So let me check. Okay, great. So the question was earthquake don't kill the people in India. Buildings do. Comment. Okay. So as soon as you see the question, guys, जैसे मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि there has to be before, जैसे UPSC gives you like this is a 15 marker question, right? 250 words, right? So आपके पास स्टार्टिंग में जो 1-2 मिनट होते हैं उसमें you have to first draw a skeleton of the answer which you are going to write. एक रफ स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में क्रिएट हो जाना चाहिए. रफ स्ट्रक्चर का मतलब इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्या लिखना है, देन आपको जो मेन बॉडी है उसके अंदर क्या चीजें लिखनी है, ठीक है, देन आपका एक वे फॉरवर्ड होगा, ठीक है, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड द आंसर. उसके पहले वन मोर थिंग इज मिसिंग, व्हाट that is which is more essential is value addition points. ठीक है, value addition point, this is what you have to keep it in mind, because कभी कभार क्या होता है कि हम लोग आंसर लिखते वक्त वैल्यू एडिशन पॉइंट को भूल जाते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन कि वैल्यू एडिशन पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए. ओके, so usually I have seen this, probably you might be knowing what could be the value addition point, but usually it does not happen because वहां पे दिमाग काम नहीं कर रहा होता है कि 7-8 मिनट में 15 मार्कर आंसर भी लिखना है आपको, तो क्या चीज आपको एज ए वैल्यू एडिशन, उसमें चाहे फ्लो चार्ट हो गया, चाहे वो डायग्राम हो गया, इट कुड बी एनीथिंग. Okay, so first एक rough structure होना चाहिए कि हाँ, I have to inculcate or include all these points in my answers. So first tell me what will be the introduction according to you guys. What could be the introduction? Let me see whether you have understood the demand of the question or not. Definition of earthquake waves. Definition of earthquake. Okay, Shweta, you? Sir, same earthquake definition, and then I link that earthquake is natural disaster which can be hazardous if people are vulnerable. Okay, what about others? Maniratna, Rishika, what about you? Sir, in the first introduction, we have to define the meaning of earthquake. Sir, I have started with some kind of factual information which is given in the second IAS report. Like almost 85% of the country is vulnerable to single or the multiple disasters.
and about 57% of its area lies in the high seismic zones. Then I have written the earthquake definition. Then I have made like uh, India's map, which are the highest seismic zones, and then NDMA guidelines. Like it has introduced 4 R's. No, introduction. We are talking only about the introduction. So, see guys, earthquake की definition का कोई point नहीं बनता है यहाँ पे. Question is not about the earthquake. First of all, you need to understand this. Question is about the disaster. Okay, and question is saying कि जो भी disaster होता है because of the earthquake, वो earthquake की वजह से नहीं होता है. Okay, earthquake की वजह से नहीं होता है, but actually में वो जो होता है वो earthquake की वजह से जो सीस्मिक जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से जो बिल्डिंग कोलैप्स होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होता है, दैट इज डिजास्टर. ठीक है. सो there is no point to define the earthquake in the definition. You will not get the marks for that. It means आपको question की demand नहीं आप समझे हो. So in that case, what could be the best introduction? So the best introduction in this could be, you need to provide some facts. Okay, facts means according to a survey of National Disaster Management Authority, 25,000 approximately human life has been lost. Okay, or you can say the fatalities has happened caused by collapse of buildings. Don't you think this introduction is now synced with the demand of the question or the statement itself? Yes, sir. Makes sense? And now this, after that, you can write which clearly or which justify that which justify that it is not the earthquake that claims the victim, but the collapse of human built structure like building, bridges, retaining walls, embankments. Okay, so then you can, after that you can say which this fact justify it is not earthquake, but buildings or the infrastructure which kills the people. Now got it? Now tell me what you are supposed to do here. What should be the, now introduction is done, we are now, what will be the main body structure? What, according to you, what is the demand of the question and what you are supposed to write? Sir, can we write factors responsible for earthquake? I'm sorry? Factors responsible for earthquake. Factors responsible for earthquake. One is natural cause and man-made cause. What about others? Shweta? Sir, even I wrote causes of earthquake. Okay. Sir, first I justified in 3-4. Your voice is breaking. Sir, in first, now is my voice clear, sir? No, it's breaking. Okay. Okay, so let me start with this. You have to find out the reasons, the lacuna, or you can say the factors, जिनकी वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो रही हैं,
ड्यू टू अर्थक्वेक? सर एक मिनट, मैंने ना बॉडी स्ट्रक्चर में कॉजेज भी लिख दिए, फिर ये भी लिख दिया कि कौन से रीजन से, जैसे कि हाई रिस्क सेस्मिक जोन्स में जो है बिल्डिंग्स, ये सब लिख दिया, मतलब दोनों चीज मिक्स करके लिखी, थोड़ा ये भी लिखा थोड़ा ये भी। Causes no need to mention. Question is not about the earthquake. अगर आप just try to understand one thing, 250 words में आंसर लिखना है, right? If you are going to write the causes, इसमें आपके natural causes आ जाएंगे, ठीक है? फिर आपके anthropogenic causes आ जाएंगे, right? मैं बता रहा हूं यहीं पे आपके 150 to 200 वर्ड कंज्यूम हो जाएंगे. How you are going to fulfill the demand of the question? So can we write like seismic mapping, which was already done by the Ministry of Earth Science by taking into the record of the past earthquakes? हाँ, that point will come. That point will come. But again, you are talking about the earthquake only. But what I am talking about, just तो सबसे पहले आपको मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं कि ठीक है, the reasons or you can say the factors responsible for the damage or fatalities. ठीक है. Now tell me, earthquake को छोड़ के, why we are saying it is not the earthquake which kills the people, but it is the building? Why? अगर इस चीज को हमको justify करना है, तो how are you going to justify this statement? सर जैसे कि poor maintenance of buildings. Yes. What is that? Poor Maintenance of buildings, like not using actual or the quality product while like building, while making the infrastructure. What and else? all. What else? Lack of earthquake resistant technology and proper building code according to generation map. Or we can say that lack of technology in the designing, right? Yes, sir. So like time to time. So like time to time, like retrofitting of buildings, like adding some new material in the existing buildings, like especially the old buildings of Chandni Chowk and all areas in our country. Mm-hmm. Okay. So basically you mean to say you are talking about the retrofitting? Yes, sir. You're talking about the retrofitting. उसको हम लोग retrofitting बोलते हैं, जिसको हम लोग मेंटेनेंस करना ही बोलते हैं, पुरानी बिल्डिंग को, ओल्ड बिल्डिंग्स को रिपेयर करना. ठीक है. Sir, can we say due to increasing migration, land encroachment is taking place and the buildings that are being constructed are very shoddy and hence they easily collapse? Rising demand. That's what you are saying? Yes, sir. Okay, what else? And buildings with heavy roofs. No. See, again, that will come under the technology, or you can say the structure itself. So, what else? Sir, can we say So like that they if our country falls short of money, then it can take credit from other countries such as Japan, which provides cheaper loans. And so now also like today's क्या बोलते हैं, like current government protocol is that it is not allowed to take the financial aids from outside, except we can take only from the NRIs in the case of disasters and all. हाँ, that point is true, but again, उसमें एक argument और आ जाती है कि बैंक जो है वो लोन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स को क्यों देगा when they are not following the norms? बिल्डर्स, बैंक अगर बिल्डर्स को लोन देंगे, चाहे वो फॉरेन बैंक्स हो चाहे डोमेस्टिक बैंक्स हो, if they are going to give the loans to the builders, कल को ये बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए तो builders will not pay back the loan, right?
तो बैंक हैव टू बी केयरफुल व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग द लोन, गिविंग द लोन टू द बिल्डर्स। तो ये बोथ साइड आर्गुमेंट सही हो जाएगी कि इसीलिए बैंक भी बोलते हैं वी आर नॉट ऑफरिंग द लोन। ओके गाइस, सो लेट मी कम टू द पॉइंट। जब भी आप फैक्टर्स के बारे में सोचते हो, ऑलवेज यू हैव टू थिंक फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। सबसे पहले एक सिटी को एक कंसीडर कर लो, जैसे मैं एक दिल्ली एनसीआर की बात कर लूं। अब यहाँ पे जो लेकुना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस किस के ऊपर आएगी? यहाँ के म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर भी आएगी, राइट? उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन बिल्डर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? देन जो इंडिविजुअल लैंड ओनर्स, जो बायर्स हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, राइट? व्हाट एल्स? फिर जो डिमांड फैक्टर हमने बात की, ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी वीकनेसेस, व्हाट एल्स? फ्रैजिल स्ट्रक्चर, So illegal constructions, illegally raising the height of the building beyond हाँ, the. वो किस में आएगा? वो किस में आएगा? वो डिमांड में आएगा, ठीक है? या उसको आप वीक इन्फोर्समेंट में भी बोल सकते हो। तो बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर which are not able to sustain the earthquake. So जैसे पहले हमने बात की, जैसे हम लोग बात करते हैं फ्रेजिल इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है? तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो इसमें? जो बिल्डिंग्स हैं, they are not earthquake proof, ठीक है? दो according to the, हाँ, So can we write like installation of early warning system? that is way forward ना, way forward में आएगा वो चीज सब। It is, we are talking about the factors जिसकी वजह से हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो रिजिलियंट नहीं है, डिजास्टर रिजिलियंट नहीं है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? Why our buildings are not disaster resilient? तो उसमें सबसे पहला रीजन यही है कि फ्रैजिल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू जो नेशनल कोड ऑफ बिल्डिंग है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, जो ये डिफाइन करता है कि what should be the structure of building, but it is not being followed. ठीक है, तो पहला रीजन ये लिख सकते हैं, ठीक है? दूसरा रीजन क्या मैंने बोला, अब इसमें आप एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे कि भुज में जो अर्थक्वेक आया था, ठीक है, उसमें जो भुज में जो बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई थी, दे वर मेड ऑफ कंक्रीट, बट उसके बाद भी द एंटायर बिल्डिंग कोलैप्स्ड इवन व्हेन द जो मैग्नीट्यूड था जो अर्थक्वेक का, इट वाज ओनली 6 ऑन रिक्टर स्केल। सो खाली प्रोडक्ट मटेरियल यूज करने से काम नहीं चलेगा, देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 which is not being implemented or followed by the builders. Hello guys, before we start with the discussion, we just want to inform you that we have launched a very special and unique type of program which is called
excel mains through the previous year's questions. In this program, we are going to cover the entire syllabus of GS paper 1, 2, 3 and 4. The philosophy behind this program is we are going to cover the syllabus not randomly but just by using or referring the previous year's questions themes, and the themes are extracted from the last 40 years of previous year's questions. There will be a live discussion, there will be a answer writing with the mentors, and the second program is the intense answer writing program, which is called Samachar Vani Plus, in which there will be a weekly classes on 10 topics which are extremely important from the UPSC mains and prelims point of view. There will be an answer writing, there will be a questions given after each and every class based on those 10 topics. So even if you are a beginner, this is a good opportunity for you to begin with the answer writing. For any further queries, or if you wish to talk with a mentor, if you have any doubts, please drop us a message on the number given below. Thank you. Now, second point जो होगा इसमें वो होगा टेक्नोलॉजिकल वीकनेसेस. ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बट इट इज एक्सपेंसिव. This kind of technology is very expensive because why it is expensive? Because it involves computers model. So that's why they are expensive. तो कंप्यूटर मॉडल्स या उसको सिमुलेशन बोल लो, ठीक है. सो इसकी वजह से ये एक्सपेंसिव है, टेक्नोलॉजी हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं. उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आएगा वो आएगा राइजिंग डिमांड. राइजिंग डिमांड जैसे आप दिल्ली का ही एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ऑफ दिल्ली एनसीआर. क्या हो रहा है राजेंद्र नगर करोल बाग में? इलीगल construction. Sir, even raising height of the building Yes. illegal. Raising the buildings. ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम हो रही है राइजिंग डिमांड की वजह से. फोर्थ रीजन क्या हो सकता है गाइस? वीक इन्फोर्समेंट. अब जैसे हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया था कि म्यूनिसिपैलिटी को दिख नहीं रहा है क्या ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन? तो यहाँ पे द इन्फोर्समेंट और द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, यू कैन से द गवर्नेंस स्ट्रक्चर लाइक म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, आर वीक. ठीक है, और जो तो इसकी वजह से ये हो रहा है. और इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो. कहाँ गया पेज? ओके, हाँ, इसमें एक पॉइंट ये हो रहा है कि उसकी वजह से क्या होता है, जब ये वीक होते हैं, जब इन्फोर्समेंट एजेंसी ही वीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीस्मिक रूल है विल लैक इन्फोर्समेंट. ये चौथा पॉइंट हो गया. पांचवा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था? एक रेट्रोफिटिंग, जो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल लेवल पे. मेंटेनेंस और रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग. तो ये एक रीजन है. उसके बाद हम लोग ने क्या और क्या डिस्कस किया था गाइस? एनीथिंग एल्स? यस, एक प्रॉब्लम है गाइस अप्रूवल्स की. अप्रूवल्स का मतलब ये होता है, ये चीज अगेन दिल्ली एनसीआर का मैं एग्जांपल ले लेता हूं. अप्रूवल मिलता है इनको खाली ग्राउंड फ्लोर का, बट कंस्ट्रक्शन हो जाता है 4-5 फ्लोर का. सो ये अप्रूवल जो मिलता है इनको जैसे दिल्ली एनसीआर में खाली ग्राउंड फ्लोर के लिए अप्रूवल मिल रहा है,
लेकिन 4-5 फ्लोर खड़ा कर देते हैं ये लोग। तो ये प्रॉब्लम किसकी तरफ से हो रही है? बिल्डर की वजह से, राइट। ये प्रॉब्लम जो है ये इंडिविजुअल की तरफ से। ऊपर जो हमने देखा वो किसकी वजह से हो रहा है? मतलब गवर्नमेंट के साइड से या जो लीगल बॉडीज हैं उनकी तरफ से। तो अब आप गाइस इसमें बताओ, ये 6 पॉइंट्स लिख दिए आपने, कैन यू सी? बस इतना ही आपको लिखना है, इतने छोटे छोटे ही पॉइंट्स लिखने हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। बस थोड़ा सा जो मैंने ये एरो एरो बनाया है इसकी जगह बस आपको एक लाइन में ये चीज लिख देनी है। अंडरस्टूड? नाउ टेल मी, since the question has asked the comment, so you have to basically cover the wider coverage. You have to cover what are the initiatives taken in this regard. इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इस चीज के लिए? एनीवन? The National Building Code. वो तो हम, हाँ, नेशनल बिल्डिंग कोड वो तो है ही। व्हाट एल्स? National Earthquake Risk Mitigation Project. इसी के लिए बताओ, खाली अर्थक्वेक के लिए? हाँ, मतलब इसको रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन सबको वो करने के लिए। मैंने पढ़ा था कि जब गुजरात अर्थक्वेक के बाद उन्होंने वहां की बिल्डिंग्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनानी शुरू कर दी हैं। इनिशिएटिव का नाम बताओ। Sir, there's an app, India Quake app. Sir, NDMA has given guidelines that relieve. That guideline is different thing. That is for the earth to, like, जो गाइड NDMA की गाइडलाइंस हैं वो it is for the earthquake, कि अर्थक्वेक में कैसे मिटिगेशन होगा, प्रिपेयर्डनेस क्या होगी, इन सब के लिए है वो। लेकिन यहाँ पे हम इसके लिए बात कर रहे हैं रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं अभी तक? सेंडाई फ्रेमवर्क भूल गए गाइस, इतना इंपॉर्टेंट है ये। देन एक आपने ये नाम सुना है SCO JTEX? It was a earthquake exercise. शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी इंडिया के साथ, जिसका नाम था SCO GTEX। इसके अलावा एनी अदर? बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। This was also for the same purpose. और बाकी इंडिया क्वेक करके एक वो था, इंडिया क्वेक, ये नाम सुना है आपने? क्या है ये? So It to is a discriminate earthquake parameters. real time information. Real time information about the earthquake. ओके, तो ये स्टेप्स हैं जो इंडिया ने लिए हैं, ठीक है, इन दिस रिगार्ड। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज द वे फॉरवर्ड, कि व्हाट शुड बी डन नाउ, क्या होना चाहिए वे फॉरवर्ड में। So now tell me what should be the way forward? Yes? The strengthening of critical infrastructure. वो सब तो है, लेकिन थोड़ा मुझे सब हेडिंग्स बताओ ना, आप किस टाइप। देखो, एक जनरल आंसर लिखना
It is not a difficult question. General points anyone can write. But if you have to score like 6 to 7 marks in this answer, or sorry, 7 to 7.5 marks, you have to write the best answer. Sir, installation of early warning system, especially the sensors on the top of the building. आपकी वॉइस बहुत लो है. Sir, देखो, एक प्रोसेस को समझो. किसी भी चीज की एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा आपको, कि जब हम लोग अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, डिजास्टर की बात कर रहे हैं, तो देयर हैज टू बी सम प्रोसेस व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड. तो सबसे पहले तो रिस्क को रिकॉग्नाइज करना हमको आना चाहिए, रिस्क रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए. ये कैसे होगा? अर्ली वार्निंग सिस्टम से, राइट? सबसे पहले तो रिस्क को रिकॉग्नाइज करना है. उसके बाद क्या करना है? रिस्क को मैपिंग करनी है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. मैपिंग का मतलब समझ गए ना? जैसे हमारे यहाँ जोन है, सीस्मिक जोन है. सीस्मिक जोन कितने कितने पार्ट में है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट? तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैपिंग होनी चाहिए कि कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट इज मोर प्रोन टू द अर्थक्वेक डिजास्टर, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हो एंड ऑल, ये सब चीजें. उसके बाद अब आपकी आएगा रिस्क मिटिगेशन. अब रिस्क मिटिगेशन में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जाए. तो इसमें अब आपके सारे पॉइंट्स आएंगे. कौन कौन से आएंगे? जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि शॉक प्रूफ बिल्डिंग्स होनी चाहिए, ठीक है? अब इन सब चीजों में गाइस एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो शॉक प्रूफ बिल्डिंग के लिए जो आईआईटी रुड़की है, उन्होंने क्या किया था, एक रिसर्च पेपर रिलीज किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि यूज ऑफ थर्मोकॉल इन बिल्डिंग्स. तो ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपैंडेड पॉलीस्ट्रीन. एक्सपैंडेड पॉलीस्ट्रीन भी बोलते हैं इसका यूज. इसको यूज करके बिल्डिंग को, जो बेसिकली बोला गया था कि जो कंक्रीट, जो जैसे अभी कंक्रीट की दो स्लैब्स हैं, इनके बीच में आप थर्मोकॉल भर दो, सैंडविच बिटवीन द कंक्रीट स्लैब्स. तो देखो, कंक्रीट से क्या है, स्ट्रेंथ मिल जाएगी, राइट? और थर्मोकॉल से क्या मिलेगी? फ्लेक्सिबिलिटी. तो दिस इज व्हाट दे हैव सजेस्टेड. तो ये चीज है इसमें. दूसरी चीज क्या है कि हमको जो फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि नया जो स्टेप है, एक और हम कर सकते हैं कि मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ, जो हमने ऊपर इशू डिस्कस किए गाइस, वही चीज लिखनी है. मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ अर्थक्वेक रेजिलिएंट बिल्डिंग. ये हम लोग कर सकते हैं. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? देन जो ये इसके लिए लैंड यूज प्लानिंग, आई एम सॉरी, लैंड यूज पॉलिसी according लैंड to यूज पॉलिसी मतलब hazard mapping. आई एम सॉरी, Land use planning according to hazard mapping. हाँ, प्लानिंग, लैंड यूज प्लानिंग. Yes sir. ठीक है, लैंड यूज प्लानिंग. आप बेसिकली ये इसी में आ जाएगा.
अर्थक्वेक रेजिलिएंट बिल्डिंग्स में, क्योंकि जब आप प्लान करोगे कंस्ट्रक्शन तो यू हैव टू फॉलो द कोड ऑफ, हाँ मतलब आप अलग से, ये तो मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट हो गया। हाँ, प्लानिंग में आप बता सकते हो कि लैंड यूज प्लानिंग, इट कुड बी a yes, it could, this could be a point. Then related to the construction. Sir, capacity building. Capacity building for what? Capacity building in the case of hospitals and all, it's like disaster. In the case of? In the hospitals and all. In the construction of house? I'm not getting what you mean by the capacity building. क्लियर नहीं वो हो रहा है कि देखो बहुत ही जेनरिक पॉइंट है, जब आपके पास और इम्पोर्टेंट पॉइंट बचे हैं तो वो चीज करो। तो अब यहाँ पे हम एक पॉइंट हम और मिस कर रहे हैं। एक बॉडी है जिसको हम बोलते हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल। BMTPC। ये क्या कर सकती है? इट कैन टेक, it can initiate retrofitting projects। क्योंकि रेट्रोफिटिंग भी एक प्रॉब्लम हमने बताई थी ना, जो इंडिविजुअल लेवल पे लोग अपने घर को रिपेयर नहीं करवाते हैं बहुत दिनों तक, ये सब, तो दैट कैन बी डन आल्सो हियर। ठीक है, तो ये फर्दर पॉइंट, लास्ट पॉइंट, बैंक्स कैन डिनाय द लोन टू दोज बिल्डर्स who are not following the guidelines। अब गाइस इसमें भी हमारे पास कितने पॉइंट हो गए? 6-7 पॉइंट हो गए हम लोग के पास बस। नाउ अब यहाँ पे एक चीज जो है वैल्यू एडिशन पॉइंट। अब मुझे इसमें बताओ वैल्यू एडिशन का क्या स्कोप है इस पूरे आंसर में? आई नीड टू नो कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड बी द वैल्यू एडिशन पॉइंट इन दिस? Sir, like use of local material in Indonesia, they firstly they use concrete material, but after continuous 2-3 earthquakes, they resort to wood material for formation of their buildings. Good. Case studies. So Indonesia का मॉडल, also Japanese model in this case। जापान में 80% of the buildings are disaster resilient। So after this way forward, use this value addition point। What else? What could be the value addition second? मैप। और ये चीज आपको इंट्रोडक्शन के ऊपर कर दी। आफ्टर इंट्रोडक्शन यू कैन ड्रॉ अ मैप जहां पे आप जोन्स डिफाइन कर दो, जो 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। और खाली जोन डिफाइन करना नहीं, आप सिटी का भी नाम लिख दो। ठीक है, जैसे इसमें सबसे ज्यादा कौन सा जोन सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन है इन पांचों में से? यस, Zone 5। यस, जोन 5। ठीक है, तो ये है। दिल्ली एनसीआर किस में आता है?
जोन 4 में, तो सिटीज का नाम एक एक नाम मेंशन कर दो, ठीक है, बस इतना. दिस इज द सेकंड वैल्यू एडिशन पॉइंट. Rest of the value addition point I already have mentioned in the model answer. Now you have to conclude the answer. How you are going to conclude the answer? Yes. Guys, conclusion में हमेशा futuristic approach लिखा जाता है in such kind of question. सर ऐसे लिख सकते हैं various stakeholders should work together to avoid disaster, ऐसा कुछ. और जेनरिक हो जाएगा, स्टेक होल्डर वाला पॉइंट जेनरिक हो जाएगा. देखो, कंक्लूड आप यहीं से कर दो जो पॉइंट्स आपने ऊपर लिखे हैं, ठीक है. जैसे आप ये लिख सकते हो कि कंक्लूजन में कि देखो, कंक्लूजन आपको 2 से 3 लाइन में कंक्लूड करना है, तो यू डोंट हैव लिबर्टी टू राइट लॉट ऑफ थिंग्स. यू ऑलरेडी हैव गिवन द वे फॉरवर्ड. सो कंक्लूड आप पॉजिटिव टर्म्स में ये कर सकते हो कि दो इंडिया हैव ए लॉ, domestic laws like कौन सा, अभी कौन सा लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, जो कोड पढ़ा था, नेशनल बिल्डिंग कोड, या सॉरी इंडिया, दो इंडिया ऑलरेडी हैव डोमेस्टिक कोड लाइक नेशनल बिल्डिंग कोड 2005. हाँ, its implementation and adherence to the guidelines are important. और इसके बाद और एक चीज और ऐड कर सकते हो, दो इंडिया हैव डोमेस्टिक कोड लाइक नेशनल बिल्डिंग कोड, इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड अडेरेंस टू द गाइडलाइंस आर इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम India can also needs to stick to the guidelines framed under Sendai framework. बस यहाँ पे आपका कंक्लूजन खत्म हो गया. So this should be the answer. So question is not about the earthquake, guys. UPSC यही चीज आपसे पूछेगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा. आई एम टेलिंग यू, आप खुद सोचो यार कि अर्थक्वेक के ऊपर यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछ लेगा, यहाँ पे कंपटीशन कहाँ रहेगा? Where is the competition then? फैक्टर्स ये सब तो कोई भी लिख के आ जाएगा, राइट? तो ये सब प्रॉब्लम है. और जैसे आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ, यूपीएससी ने जैसे पूछा था, फ्लड तो हर जगह आता है. चेन्नई के ऊपर क्यों यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा? बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन. वहां की जो प्लानिंग है, डिजास्टर इसकी वजह से हुआ, फ्लड की वजह से नहीं हुआ. वहां की जो प्लानिंग है, सिटी प्लानिंग, उसमें प्रॉब्लम थी. दिस इज द प्रॉब्लम. तो सिमिलरली, डोंट यू थिंक दिस द क्वेश्चन व्हिच was given to you guys, earthquake don't kill people in India, building does, यहाँ पे सीधे एनसीआर का एग्जांपल आपके सामने आ जाएगा, दिल्ली एनसीआर का. अगर दिल्ली में इवन 6 रिक्टर स्केल पे भी अगर इस इंटेंसिटी का भी अर्थक्वेक आएगा, देन डिजास्टर विल बी लाइक वेरी हैवी. Fatalities will be much more than expected. So that is the reason you need to
focus on these kind of questions in a broad term. अर्थक्वेक तो क्या एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, आपका बेसिक पता होना चाहिए उसको. जो ज्योग्राफी में क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आ सकता है कभी कभार, अदरवाइज वो भी जो जोन होते हैं उसके पी वेव, एस वेव, उससे रिलेटेड. Otherwise, I don't think so this kind of question will come directly. Okay, guys. So please be active in the library. This kind of questions you will get every day. Okay, and keep practicing. Try to every day you should write few answers, because उसी से आपको पता चलेगा कि what is the demand of the question, how to write, and what are the value addition point, how the heading, subheading should be used. So all these information gradually you will pick up, and over the period of time, I'm sure you will get expert in the answer writing. Okay, guys, so I'm going to end the session, and see you soon tomorrow. Thank you, sir. Thank you. Hello guys, before we start with the discussion, we just want to inform you that we have launched a very special and unique type of program which is called Excel Mains through the previous year's questions. In this program, we are going to cover the entire syllabus of GS paper 1, 2, 3 and 4. The philosophy behind this program is we are going to cover the syllabus not randomly, but just by using or referring the previous year's questions themes. And the themes are extracted from the last 40 years of previous year's questions. There will be a live discussion, there will be a answer writing with the mentors, and the second program is the intense answer writing program which is called Samachar Vani Plus, in which there will be a weekly classes on 10 topics which are extremely important from the UPSC mains and prelims point of view. There will be an answer writing, there will be a questions given after each and every class based on those 10 topics. So even if you are a beginner, this is a good opportunity for you to begin with the answer writing. For any further queries, or if you wish to talk with a mentor, if you have any doubts, please drop us a message on the number given below. Thank you.